हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी JOA IT पोस्ट कोड 903 का क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू योर प्रोविजनल आंसर की। आप ध्यान रखिए, प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट है विच फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। सो तो राइट आंसर इज ए, ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट। नेक्स्ट इज व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस। तो कब होती है? इसका जो आपका करेक्ट आंसर है व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है in which year the rural landless employment guarantee program was launched by the government of India। so इसका करेक्ट आंसर है ए 1983। नेक्स्ट है which cloud is made up of tiny ice particles। so इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो फिफ्थ का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है सी, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हवाइन आइलैंड इज आर लोकेटेड इन। तो कहाँ लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट इज नॉर्वेस्टर्स कॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन। तो कहाँ करते हैं ये? सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए, असम एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सीरियल इन इंडिया इज। तो कौन सा है वो? इसका करेक्ट आंसर है सी, राइस। नेक्स्ट है उर्सवती हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो ये HP से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है बी, नगर। नेक्स्ट इज बुर्राह इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। सो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो है सिरमौर। नेक्स्ट इज लोरी फेस्टिवल ऑफ प्रागपुर इज विच लेवल ऑफ फेस्टिवल। तो कौन सा है? स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नेशनल लेवल है? सो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टेट। नेक्स्ट इज अ फेमस शक्ति टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो कहाँ है इसमें से आपकी जो टेम्पल है? सो इसका जो ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट इज राजीव नैयर वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। तो परशुराम अवार्ड किस ईयर में मिला था उनको? डी, 1997 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज एट इट विच प्लेस इन HP। तो कौन सी प्लेस में है ये? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, भद्दी। नेक्स्ट इज बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है सबको पता है, मंडी है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड डॉक्टर YS परमार become the chief minister of HP for the first time। तो कब बने थे वो फर्स्ट टाइम? सो सी, 24th March 1952 is the correct answer। next is which Himachal princely state refused to side with the British during the War of Independence in 1857। तो कौन सा आपका हिमाचल का प्रिंसली स्टेट था? सो डी, बुशहर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज श्री JC मल्होत्रा वॉज द चेयरमैन ऑफ। तो किसके चेयरमैन थे वो? सो ए, HPPSC के थे, ठीक है। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, 4। नेक्स्ट इज कशांग 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ HP। तो कौन से रिवर पे है? सो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट इज गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। अगर आपने मेरा चैनल फॉलो करते हैं आप लोग तो आपको पता है हमने प्रिंसली स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स है इन पे एक डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें हमने टैबुलर फॉर्म में ये एक्सप्लेन किया गया है, आपको बताया गया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, सो 21st का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? सो डी, कांगड़ा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पिन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। सो आपका पिन वैली कहाँ है?
B. Lahul Spiti is the correct answer. Next is, who was the first female swimmer to win 7 medals in a single Olympic event? So इसका जो correct answer रहने वाला है वो है C. Okay. Next है आपका, who won the Hungarian Grand Prix 2021? तो इसका आपका correct answer रहने वाला है D. नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर फॉसिल फ्री स्टील? सो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो है डी. नेक्स्ट है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज जो आपका माइट इज रिटन एज LHFGS, हाउ इज बिलो रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DADKNV. Next is, Sushi lives to the north of Rajesh, who lives to the west of Kamlesh. Arun, who lives to the south of Sushil, have his house in which direction with respect to Kamlesh? So इसका जो आपका correct answer रहने वाला है वो है D, cannot be determined. Next is antonym of malicious. So इसका एंटोनम रहने वाला है D, generous. Next is, one word substitution for the normal adobe of any animal or plant is. So इसका जो आपका correct answer है वो भी है B, habitat. Okay. Next is, when I met her last year she dash for 5 years. She had been married. Okay. तो 31st का P होगा, had been married for 5 years. Next is, meaning of the idiom to look down one's nose at is. तो इसका क्या होगा आपका ये D होगा, to regard with half hidden displeasure or contempt. Next है आपका इसमें समास क्या है? सो इसका A रहेगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, सत्यानंद का संधि विच्छेद, D विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, तप का विशेषण है. सो इसमें आपका जो है 35 का वो C रहेगा. नेक्स्ट है आपका कोशिश का प्रत्यय, इसमें आपका D रहेगा करेक्ट. नेक्स्ट इज, which of the following is not a valid type of table field in SS 2013? सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ईमेल. नेक्स्ट इज, 2 types of table views in MSSS are dash and design view. सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है C, data sheet view. नेक्स्ट इज, how will you find the data fields beginning from the letter A and B by using find and replace dialog box in the data sheet view of a table in MS Access? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है D. नेक्स्ट इज, which of the following field types in an MSSS table is read only? सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है D, calculated. Next is, what is the full form of ODBC? सो इसका जो आपका करेक्ट फॉर्म है वो है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी. नेक्स्ट इज, a dash key consists of one or more attributes of a table that is primary key of some other table in the database. So 42nd का A will be the correct answer, a foreign key. Next is, what is the decimal number represented by this number in binary system? So आपको ये पता होगा. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका C. नेक्स्ट इज, what will be the representation of -25 in 2's complement form? सो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है B. नेक्स्ट इज, which data structure is also known as first in first out, FIFO? सो इसका जो है आपका C will be the correct option, that is Q. Next is, consider the following data in an Excel sheet. What will be the value or returned by Excel formula? जो ये आप लिखोगे. सो आपको ये दिया गया है तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता करना है, दैट इज D8. Next is, a dash is a powerful tool in Excel to calculate, summarize and analyze data to find out patterns and trends. तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है A. Next is, in a Excel sheet the cell A2 contains
a data value of 10 December 2021, then what will be the value determined by the formula? फॉर्मूला आपके पास दिया गया है, सो आपको इसका राइट आंसर पता करना है, दैट इज फ्राइडे. Next is the cell A1 in a certain MS Excel sheet contains the value 212. What will be the value returned by the formula? Formula आपको दिया गया है, so इसका जो आपका correct answer है that is D 215. Next is what will be the value returned by MS Excel formula base. Okay, so इसका जो आपका 50 का correct answer है वो है D. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एमएस एक्सेल फार्मूला एमएस एक्सेल से आपको देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें आपका 8.3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज टू कंसिडर द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट. ये आपको दिया गया है व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न्ड, सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ए 13.5. नेक्स्ट इज in MS Excel, a dash is a sequence recorded by keystrokes and mouse events that can be replayed as many times as one want. So इसका जो correct answer है that is B macro. Next is which of the following is not a valid cell address in MS Excel. So इसका जो आपका correct answer है that is A is 241. Next is how many cells are there in the cell range A10 is to D30 in MS Excel. So इसका जो आपका correct answer है that is C 84. Next is the concept of dash was developed by MJ Jacquard in 18th century to control textile looms. So the correct answer over here is C punch card. Next is fourth generation computers used microprocessors which are designed by using dash technology. So ये हमने लास्ट टाइम जो आपकी 817 के लिए हमने वीडियोस प्रिपेयर की थी उसमें हमने ये बहुत अच्छे से आपको बताया था. सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है 57th का दैट इज बी. नेक्स्ट इज फ्लॉप्स इज अ unit to measure the processing speed of computers. What is the full form of it? So full form क्या है इसका जो आपका full form है वो है floating point operations per second. Next is B, जो आपका next question है full forms are the forms of किस चीज़ के ये forms है B2B जो ये है आपका कि किस चीज़ के forms है, तो 59 का correct option A है, क्लाउड मॉडल्स के हैं. नेक्स्ट इज द डैश सेंसर इन अ मोबाइल डिवाइस ट्रैक्स द ओरिएंटेशन व्हेनेवर द डिवाइस इज रोटेटेड. तो कौन सा करता है आपका, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गायरोस्कोप. नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट डैश इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल्स. तो क्या है उसका करेक्ट आंसर दैट इज डी वन ड्राइव. ठीक है. इन मोबाइल फोन सिस्टम जोग्राफिकल रीजन इज डिवाइडेड अप इनटू डैश to implement the concept of frequency reuse. So the correct answer is C, cells. Next is what is the full form of IoT? That is इसका correct option आपका जो है 63rd का that is D, Internet of Things. Next is dash is a platform provided by Amazon that provides scalable and cost-effective cloud computing services. That is your A is the correct answer, AWS. Dash is a register in CPU that stores the intermediate results of arithmetic and logical operations. So इसका जो है आपका B correct answer है. Next है आपका in dash CPU addressing mode the operand is included in the instruction itself. इसका जो आपका correct answer रहने वाला है वो है B. Next is which is an example of secondary storage device, that is your pen drive. Next is your which of the following memory types has the highest speed and minimum latency, that is your CPU registers. Next is कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किस चीज़ के प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर बी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट इज द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज एंड राइट बैक एंड डैश.
सो इसका जो करेक्ट आंसर है 70 का, दैट इज डी, राइट थ्रू. द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रैम इन रोम प्रोम एंड EPROMs of a computer system are called. तो क्या बोलते हैं इसको? 71 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. Next is the dash keys on a QWERTY keyboard have small bumps on them to help positions the finger without looking at the keyboard. So correct answer over here is A, F and J. Next is RAID. Technology combines multiple physical disk drives to achieve speed and redundancy. What is the full form of it? So full form बताना है आपको. इसका full form है A is the correct option. Next is which of the following optical media storage has the highest capacity? So Blu-ray disc is the correct answer. Next is which component of a laser printer melts the toner particles to form a permanent impression on the page? So the correct answer over here is 75 का जो correct answer रहने वाला है वो है D. Next is 76th. That is which of the following storage media uses flash memory? That is solid state disk. Next is 77th is ALU is the fundamental part of dash of a computer. सबको पता है CPU. Next is the dash in a computer provides the option to change the priority of booting options in a computer system. So the correct answer is B. Next is which is a wireless technology that uses multiple transmitters and receivers to transfer more data at the same time. So the correct answer over here is C. Next is which of the following layers in ISO OSI reference network model lies between the physical and network layers? So the correct answer over here is A. Next is which layer in ISO OSI reference model is responsible for routing or packets of over network? So the correct answer is C, network. Next is a web-based information repository that is collaborated edited by the members of the concerned community is called. So the correct answer is B, Wiki. Next is the frequency band of the spectrum reserved for unlicensed usage is called. So the correct answer over here is B. Next is 84th. A computer can capture all the packets being transmitted all over the shared transmission medium by setting the network of interface in dash mode. So the correct answer is C. Next is 85th question is which of the following is invalid address? That is D is the correct answer. Next is which of the following IP address is reserved in IANA for private use? That is A is the correct answer. Next is which of the following type is a optical fiber cable? Optical fiber cable पूछा गया है आपसे यहाँ पे, तो C is the correct answer. Next is what is the full form of the term WEP and with the term used with Wi-Fi security? So what is the correct answer? That is D is the correct answer. Next is 89th question. Which of the following is generally not a function of an operating system? So C, word processing is the correct answer. Next is which of the following CPU scheduling algorithms may not cause starvation? So correct answer is D. Next is a dash is a memory area that stores the data while it is being transferred between two devices or between a device and a application. So the correct answer over here is C, buffer. Next is which of the following is not a major version of Microsoft Windows operating system? So 92, B is the correct answer. Next is in Windows 10 how can one sneak a peek at the desktop without closing or minimizing all the
open windows. So the correct answer is B, by moving the mouse cursor at the end of the taskbar. What is the short method to minimize all the windows except the one you wish to keep visible in Windows 10? So 94 ka the correct answer is B, by grabbing the Windows title bar using the mouse and shaking it. Next is 95th question, that is in the Windows 10 the dash provides the quick access to notification toggle battery saver mode and choose a network and access is. So C is the correct answer, action center. Next is which of these describes a situation when a computer does not respond to any input from the user? The correct answer over here is B, hang. Next is a dash is a situation that arises when two threads access a shared variable simultaneously and the final value in the variable depends upon the order of execution of the thread instructions. The correct answer is B, race condition. Next is 98th, what is the format of an Android application package file? So the correct answer over here is C. Next is red hat is an example of, तो किस चीज का example है ये? B is the correct answer. Next is what is Linux command to delete a file? तो क्या है इसका? आपका 100 का correct answer will be B. Next is a or an reads a statement at a time, translates into the machine codes, executes it, and then go on to the next statement of the program's interpreter. Next is which uses mnemonics for machine instructions and names for CPU registers and memory locations. So the correct answer is D. Okay, next question is which of the following program languages was invented by Guido van Rossum? So the correct answer is D. Next is which of the following program languages uses the concept of classes? B is the correct answer. Next is what does the flowchart shown below performs? So iska jo aapka correct answer rehne wala hai, that is 105. Correct answer is B, compute. Okay, next is how will you create a perfect circle using oval tools in MS PowerPoint? So the correct answer is C. Next is which of the following is not a type of animation in MS Paint? So the correct answer is A, rotation. Next is the dash view shows current slides, the next slide, speakers, notes, and a timer to help the presenter. 108 ka correct answer is B, presenter. Next is what is the correct character sequence to be typed in the equation editor in MS Word to insert the mathematical formula? So the correct answer is B. Next is what are the names of two frictional characters commonly depicted as users to demonstrate cryptography systems and protocols? So the correct answer is D. Next is plain text is transformed into dash by applying an encryption algorithm. So the correct answer is A. Next is Bitcoin and Ethereum are the examples of, तो किस चीज़ के ये examples है? C, cryptocurrency के. Next is which of the following tags in HTML ML does not require a closing tag? कौन सा closing tag required नहीं होता? तो C is the correct answer. Next is which of the following is not a valid tag in HTML5? So the correct answer over here is C. Next is which language is mainly used for client side scripting in HTML documents? So 105 का correct answer is A. Next is which of the following HTML tag is used to create a numbered list of items? The correct answer is D. Next is which of the HTML tag is used to create a cell in a table row? The correct answer is A. Next is how will you add a tooltip to an HTML element? C is the correct answer.
Next is which HTML tag is used to insert a horizontal line in an HTML document. C is the correct answer. Next, the HTML entity to insert a symbol HTML document is C. Next is an HTML command is enclosed inside. So the correct answer is D. Next is what is the default size of the text text in this HTML element. So the correct answer is D. Next is what is the full form of CSS. So the correct answer is A, that is okay. Next is how will you select the outline color of shape in the Microsoft Paint. So correct answer is B, by holding the shift key while selecting the color from the palette. Next is what utility in Windows OS is used to create disk partition, resizing partition, and formation partition on the storage drive. So the correct answer is B. Next is which toolbar in MS Word 2013 by default contains 3 commands: save, undo, and redo. So the correct answer is B, quick access. Next is what is the shortcut key to redo the undo changes in MS Word. So the correct answer is D. Next is pressing dash removes character level formatting from the text in selected text in MS Word document. 128B is the correct answer. Next is APA, Chicago, and MLA are the standards. So the correct answer is A, document formats. Next is which tab in MS Word provides options for the table of content, footnotes, and citations. So the correct answer over here is A, references. Next is what is the shortcut key to set a line spacing of 1.5 in a MS Word paragraph. So the correct answer is B. Next is what is the shortcut key to show replace dialog in MS Word. So the correct answer is D. Next is which of the following language is used for programming a macro in MS Excel. So the correct answer is A. Next is which is a software tool included with MS Word that provides a synonym for the selected word. So the correct answer is B. Next is by using dash option while printing more than one copy or a multi-page document, the printer will print all the pages for each copy before printing the next copy. So the correct answer is B. Next is entering a number 0 in a cell Excel sheet will and formatting it as the date will. C is the correct answer. Next is the what does the letter R means in CD-R disk. So what does that R means? That means recordable. Next is which layer in TCP IP networks uses segment as transfer unit. So the correct answer is A, TCP. Next is which is a communication mode in which both sender and receiver may transmit simultaneously. So the correct answer is C. Next is which of the following is not a technical specification for a printer. D is the correct answer. Next is an escape sequence begins with dash character in C. So what is the correct answer over here? That is your /. What does the letter C stands for? CMK YK, a color model. So the correct answer over here is A. Next is which of the following symbols represent the address operator in C language. So the correct answer is C only. Next is what is the unit of frequency. So frequency का unit क्या रहता है? हमेशा फ्रीक्वेंसी का जो आपका यूनिट होता है वो हर्ट्स रहता है. व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस. सो द करेक्ट आंसर इज टी. नेक्स्ट इज डैश इज अ नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन names into IP address.
So A is the correct answer. Next is which of the following is an email, a client software application? So C is the correct answer. Next is which of the following organizations oversees the allocation of public IP address in a fair and consistent manner? So the correct answer is D. Next is what does GPL means in free software world? So that means your GNU public license. Next is which of the following is non-valid hexadecimal number? So the correct answer over here is C. Next is the modulo operator presented using dash symbol in C language. So D is the correct answer, percentage. Next is which of the following is the correct truth table for NOR operation, NOR operation? So इसका जो आपका correct answer रहने वाला है that is B. Okay, next is what is the shortcut key to permanently delete a file without moving it to the recycle bin in Microsoft window? So correct answer is C, shift plus delete. Next is which of the following HTML tags is used to create hyperlinks in the web pages? So the correct answer over here is B. Next is which of the following is not an essential component of a data communication system? So program is the correct answer. Next is which of the following connectors is used for UTP cable? So A is the correct answer. Next is an alloy used for making heating elements for electric heating devices is, तो इसमें से कौन सा आपका alloy यूज़ किया जाता है? That is nicromium. Next is brass is an alloy of, तो brass किस चीज़ का आपका alloy है? That is zinc और copper का है. Next is the type of glass in making lenses and prisms is, तो कौन सा आपका glass यूज़ किया जाता है? That is your flint glass. Next is nautical mile is a unit of distance used in, तो कहाँ यूज़ किया जाता है आपका? सो ये किया जाता है आपके नेविगेशन में. एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन द ब्लड, तो आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीशियम, तो कौन सा ब्लड में नहीं फाउंड होता है? सो क्रोमियम नहीं होता है. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो कितनी रिब्स के पेयर्स होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी में? सो आपको वो बताने हैं. सो दी 24 रिब्स टोटल होते हैं, पेयर्स नहीं बताने, टोटल बताने. 12 पेयर्स होता, ठीक है. अगर 12 पेयर्स लिखा होता तो ये करेक्ट होता. नेक्स्ट इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वैदिक सोसाइटी वाज लेड आउट इन विच फॉलोइंग टेक्स्ट? सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज डी. नेक्स्ट इज स्मृति. नेक्स्ट इज महावीर वॉज born at, तो वैशाली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज which of the following which is not an Indus Valley site? So इसमें से कौन सी एक Indus Valley site नहीं है? So C is the correct answer. Next is under which Sultan Khalisa land increased considerably? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है that is B. Next is which Mughal ruler has been called as prince of builders? तो किसको बोला गया है? So D, शाहजहां is the correct answer. Next is when Subhash Chandra Bose resigned as the president of Indian National Congress, who was appointed in his place? सो इसका रिज़ाइंड किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब रिज़ाइन किया था, तो फिर उसके बाद आपका जो कौन प्रेसिडेंट बने थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड. सो क्या ऑब्जेक्टिव है? इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो ये था आपका पोस्ट कोड 903 का पूरा पेपर.
आई और ये जो आंसर्स मैंने आपको बताए हैं अकॉर्डिंग टू आपके जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग बताया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।